Over 5,000 years ago, as Bronze Age civilizations developed in Mesopotamia and Egypt, great cities arose along the floodplains of the river Indus in present-day Pakistan. At its peak, the Indus Valley civilization had a population of 5 million and was spread across 280,000 square miles. It was known for artisans, engineers, and the probable birthplace of yoga. Yet, a few centuries later, the carefully planned metropolis was abandoned, and the ruins were lost until rediscovered in 1911 by Indian archaeologist D.R. Bandekar. As the story goes, he was guided to the mound by a Buddhist monk while travelling in a boat on the river Indus. In his report, he believed the place to be no more than 200 years old because the bricks found here are of a modern type. प्रोफेसर भंडार के लिए घर जो है यहाँ पे आए थे पहले 1911 में वो आए थे सिकंदर आजम की जो है ना वो कहीं जहाँ ठहरे थे गुजर रहे थे उसके पीछे आए थे कि कहाँ ठहरे थे वो तो ये जो है मोहनजोदड़ो जहाँ हम खड़े हैं ये इलाका कहलाता था लबे दरिया तहसील लबे दरिया अभी इसका नाम आ गया है डोकरी तो पहले इसका पुराना नाम था लबे दरिया तो वहाँ पे आया यहाँ भी दरिया बह रहा था इस साइड में भी इस साइड में भी तो वो आए कश्ती से उतर के उसने बड़ा टेला जो देखा फिर ये स्तूपा है इसके ऊपर चढ़ गए अभी तो ये इसे डिस्कवर किया हुआ है इसकी खुदाई की हुई है लेकिन तब भी इसकी खुदाई नहीं थी यूँ ही टेला था तो यहाँ से कुछ उसको सिक्के मिले बुद्धिस्ट पीरियड के तो 1911 में ही हड़प्पा में खुदाई चल रही थी सरजान मार्शल वहीं खुदाई करवा रहे थे तो ये जब वापस गए तो उसको जिसने दिखाया सिक्के दिखाए तो उसने देखे और यहाँ की बड़ी तारीफ़ की बड़ी बातें बताई यहाँ की देखिए कि बहुत सारी बड़ी साइड है बड़े बड़े टेले बने हुए हैं तो फिर सरजान मार्शल यहाँ आए विज़िट के लिए उसने देखा पहले स्तूपा की खुदाई कराई उसके बाद यहाँ इसको बोला कि भाई हमें जो है ये तो बुद्धिस्ट पीरियड है फिर आहिस्ता आहिस्ता ये डिविनिटी स्ट्रीट है यहाँ नीचे गए खुदाई करते हुए यहाँ इनको सील मिली पहली सील पहले तो किसी और जगह पे सील मिली थी लेकिन वो कह रहे थे कि ये कहीं ना कहीं ये तहजीब जो है दफन है यही जगह है। कौन सी सील थी वो यूनिकॉर्न की सील है। यूनिकॉर्न फर्स्ट सील डिस्कवर्ड इन मोहनजोदारो। किंग पीस जब फाउंड हुआ है वो किंग पीस मिला है DKB से DKB उस साइड को है तो जब वो मिला है तो लोग उस वक्त नारे लगा रहे हैं उसकी तस्वीर बनी हुई है वो हाथ उठाए हुए नारे लगा रहे हैं। In 1924, after years of further digging and finding no parallels with other civilizations, the Director General of Archaeology Survey of India, Sir John Marshall, announced the discovery of the Indus Valley Civilization. In one stroke, the known history of India was pushed back by 3 millennia. On the centennial anniversary of the discovery of Mohenjodaro, filmmaker Saqib Masouf visits the site for the 4th time. Each visit has been under a different regime. 1970 में इस वाले रास्ते से आया अच्छा मुझे भी याद है इतना सारा वो जानवर सारे परिंदे थे उसी तरह से बस रिक्शा बदल गया इस रास्ते से उसके बाद बच्चे थे ना पिछले साल और 6 साल का था 6 साल की कौन सी जमात पढ़ते 6 जमात ये दूसरी जमात थी दूसरी शेरा साहब के ज़माने में 87 में दूसरी 99 मुशर्रफ साहब अब 2011 में जरदारी साहब के साथ 4 तो चौथी बार
पांचवी बार देखे किसको। फोटो साहब देखा था इधर आए थे 1974 में। उसके साथ बड़े बड़े वजीर थे, अमीर थे, बड़े बड़े बादशाह आए थे। इधर जो आए थे उसने कहा था इसको पानी निकाल के दे। वो जो चमड़े के डोल थे ना, मैंने उस हाथ से पानी निकाल के वो सारे वो देख रहे थे। तो ये 5000 साल ये पानी पुराना यहाँ से बुन रहे कुएं से, 5000 साल पुराना वो सारे देख रहे थे। वो तो कितनी इसकी डीप पे कितने वो लोग ये मेहनत करते थे, पीते थे, इतने करते थे। और इसमें किसने पानी किसने पिया था? ये नहीं उसको ये सारे देख रहे थे बस वो। अच्छा, भुट्टो साहब ने पानी पिया था? नहीं उसको दूसरे को देखा रहे थे ना वो। अच्छा अच्छा। वजीर अमीर सब 40 मुल्क के बादशाह आए थे। अच्छा। इधर आए थे ये। हाँ, वो शाह ईरान भी आए थे। बिल्कुल। हाँ जी। तो आप थे यहाँ पे जब? इधर थे ना वो। अच्छा, नया नया था उस वक्त मोहनजोदारो? हाँ नहीं बिल्कुल पुराना था ये काम। नहीं मैं मतलब वो उस वक्त उन्होंने नया एयरपोर्ट बनाया था। हाँ एयरपोर्ट पे बनाया था। इधर आए थे, जहाज में उतरे थे ना ये। अच्छा। बड़े वो बैलगाड़ी तक यहाँ आते थे। Among the people who care about Mohenjodaro is Miral Abro, artisan, poet, and currently unemployed conservationist. He has been deemed unemployable since reporting the theft of bricks from the archaeological site. कि अभी भी जो है मोहनजोदड़ो की ज़मीन पे कब्ज़ा हो रहा है, कब्ज़ा हुआ है। वो रोड बन रहे हैं, एक रोड इधर बना है, वहाँ से आपको पॉटरी बहुत बड़े मिकदार में पॉटरी मिली है। अभी आप देख सकते हैं पॉटरी सरफेस पे पड़ी है, टूटे हुए बर्तन पड़े हैं। लोग ईंटें जो हैं वो उठा के ले जा रहे हैं, ट्रैक्टर पे ईंटें जो है ना वो ले जा रहे हैं। मैंने उनकी तस्वीरें बनाई थी, वो इनाम ये मिला मुझे, भाई अब नौकरी से निकाल दिया यहाँ से। अभी मेरा वो कोर्ट में, मैं हाई कोर्ट में केस किया हुआ है। यहाँ ये है जो मोहनजोदड़ो के साथ जो मोहब्बत करता है, जो कुछ ये ना बोलता है, तो उसके साथ थोड़ा आगे पीछे होता रहता है। अलबत्ता मोहनजोदड़ो के लिए हम सब कुछ जो है ना झेलने के लिए, सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं। We love Mohenjodaro. I love Mohenjodaro. The biggest city of the Indus Valley civilization, Mohenjodaro, is also the world's first planned city. Its builders created well-ordered streets and homes with sophisticated water and sewage systems, unmatched until Roman times. At Mohenjodaro, the use of standardized baked mud bricks ensured precision engineering, making it the only Bronze Age city where one can stroll down ancient alleys shaded by intact walls. ओरिजिनल जो है ब्रिक वो आपको बता रही है कि नहीं ओरिजिनल है। ये बाद की ब्रिक है, देखें। हाँ, ये आपने खुद आप लोगों ने ये बाद में बनी कंजर्वेशन। जी कंजर्वेशन। ये असल में ओरिजिनल थी, ये गिरी है, तो बाद में जो है हमने नई ईंटें लगा के इसको वहाँ जितनी इसकी हाइट थी उसी हाइट पे छोड़ा। ओरिजिनल हाइट पे छोड़ा है। ये ओरिजिनल है। हाँ ओरिजिनल है। हाँ ये ओरिजिनल है। इसके ऊपर जो है वो रिपेयर है। अच्छा, इस तरह देखिए। ये ओरिजिनल रेड मोहनजोदारो है। ये गिर रहा है अभी जो है ना, ये जो है उसको साल्ट खा रहा है, वो नीचे गिर रहा है। ये देखें, ये यहाँ से ये गिरा है, ये देखें। ये ओरिजिनल उनका बनाया है। बिल्कुल ये यहाँ से ये ओरिजिनल ईंट देखें। आपको नई ईंट अभी ये देखें, ये नई ईंट है, ये नई ईंट है, ये देखें। और ये ओरिजिनल है, ये भी ओरिजिनल है, लेकिन इसको साल्ट पकड़ गया है। नहीं हूँ मैं, ये नहीं है, ये बात की है।
आपको एक अपनी सिंधी में कई नज़म जो है वो सुना रहा हूँ। मोहें जी मिट्टी आहियां सदन खां पई लुटी आहियां केत अची साथ ॾियो सूरन में पई सटी आहियां रोज़ ॿुॾां थी रोज़ बुरां थी गलटियूं खाई रोज़ किरां थी छा ॾोहनि जी का भठी आहियां मोहें जी मिट्टी आहियां सदन खां पई लुटी आहियां हू रोज़ मूंखे था इज़ाइन हू रोज़ मूंखे था इज़ाइन धोखे सां था ठाहिनि पंहिंजा पिया बंगला अॾाइनि करे ॻाढ़ा ॻल भिनी आहियां मोहें जी मिट्टी आहियां सदन खां पई लुटी आहियां केत अची साथ ॾियो सूरन में पई सटी आहियां मीर जेके मुंहिंजे सिर जा मालिक हर घिटी ऐं घर जा ख़ालिक सारे तन खे भिनी आहियां मोहें जी मिट्टी आहियां सदन खां पई लुटी आहियां केत अची साथ ॾियो सूरन में पई सटी आहियां। As ancient as the land itself are its people. Prime among them is Subbu Gyan Chandani, born in 1920 in the village of Dokri near Mohenjodaro, a revolutionary writer and a self-described rebel. I was a student in a village, near my village, Bagi. A teacher, his name was Achar. He said one day, let's go to Mohenjodaro. So he took the first expedition to Mohenjodaro. At that time I was the officer in charge for martial law was there. A guard was there. Ancient Mohenjodaro. On top is some Buddhist remains probably in the super. There's some probably nail or something from the Buddha's body which was buried in the super. Comrade Subbu was called the man from Mohenjodaro by none other than Rabindranath Tagore, whose academy Subbu joined in 1939 as a young boy. He could not pronounce my name, Subbu. He couldn't? He could call me Subbu. But he used to always find it convenient. Ask Chandla, who was our principal, as well as the secretary. Call that boy from Mohenjodaro. That's what he was Because saying. that became the catchword for it. And when I was participating in the defense movement on the day, it was he permitted. He said, my son, I don't want these CID's bugs here. They are bothered by teachers and students a lot. I don't want to see them again. But if you want to have this movement, independence movement, independence revolution, I don't mind. I prepared to pay the price. But you should know that you will be followed from now on. There will be a report to the Dokri police, Haladkara police. And since that day, 39, I am on the record of the police. The troublemaker who created independence movement in Chandikira, the most peaceful. I supported Pakistan in 1948. Some of our comrades have retracted their support. Yesterday, when those of them who came from India, they said it was a mistake to support it because of a separate Muslim state. I think it was the right decision. Right or wrong, we had to belong to this region of Pakistan. It would have been a tragedy if the man from Mohenjodaro had left Mohenjodaro and migrated to India. So we are lucky you stayed. No, I have never thought of migrating beyond. Pakistan में हाँ, वो जेल में आया, कहने लगा यार तुम खामा खा यहाँ क्यों पड़े हुए हो? हिंदुस्तान जाओ, पढ़े लीडर बन जाओ। चले जाओ। हाँ, मुझे चले जाओ। मैंने कहा मुझे लीडर नहीं बनना।
मुझे चाहिए अपना सिंध में रहना, और सिंध में मेरे सुनने वाले भी हैं, मेरे प्यारे भी हैं, मेरा घर भी है, भाई भी है। In Pakistan, while Mohenjodaro is promptly displayed on currency notes and in cultural showcases, in reality, inheriting the art and culture of Indus civilization is problematic to a conservative Muslim society. कहना है कि ये स्टैचू है ना, ये हज़रत इब्राहिम का है। अच्छा। क्योंकि वो पीरियड जो है सेम है। अच्छा। ये यहूदियों की किताबों से मिलता है कि इब्राहिम जो है उर से आया, और इस वक्त जो पोजीशन है उर की वो है इराक़ और ईरान के बॉर्डर पे, लेकिन ईरान के अंदर है। और वो जो इब्राहिम के बड़े थे वो उर के ईस्ट से आए, तो वहाँ ईस्ट उनका मोहनजोदड़ो बनता है। और मोहनजोदड़ो की जवानी थी जब ये था कि आप देखें ना, जो इस्लामी बताते हैं कि भाई ऊपर शेव होनी चाहिए, और जो है वो बनी हो, और ये जो है रोब बांधी हुई है, और एहराम पहना हुआ है अजरक का, और तावीज़ बांधे हुए हैं। और उस टाइम में जो ये देवता है ना, उनके साथ उनकी किसी की आपको शेव नहीं मिलेगी इस तरह की शेव जो है, क्योंकि बाल कटाना हज़रत इब्राहिम की सुन्नत थी। तो दूसरों के बाल नहीं कटे हुए, इनकी कटे हुए हैं। It is such a fundamental part of South Asian society, the ancient Indus Valley civilization, of Hindu, Muslim, Pakistani, tribal, other kinds of cultures, and the way they exist today, that it's not a question of trying to appropriate this for one culture or the other culture. And the way to move forward is really science. It's to do real investigation. It's to take pride in a joint heritage, to find the funds and the scholars who are going to research it properly and draw out those connections and understand better the historical and economic and political roots of society in the subcontinent. They're both there at the same time. And the sort of proto-Shiva seal, that yogic figure seal, how can we not imbue but think that there must be some connection to yoga, because the pose is so similar, and yoga is a tradition in India that reaches back so far, and even if there's a big gap from when we think it started to the ancient Indus Valley civilization, there just may be pieces of that gap that we haven't filled in yet. At the same time, we can't look at the past through the lens of the present and think that things are more connected than we actually have evidence for. So it's just a guess, it's an assumption, it's a good hint that there's a connection, but we're not sure. And that's part of the mystery and the interest in negotiating the different spaces culturally between us and the ancient Indus Valley times, and recognizing potential connections and realizing that there are big gaps in our knowledge. It makes life interesting. पाकिस्तान में वहाँ मोस्टली उर्दू ड्रामा ही ठाहींदो आहियां, जंहिंजी कहाणियूं फैमिली ओरिएंटेड स्टोरीज़ हूंदियूं आहिनि। पर जीअं मां सिंधी आहियां, मां सन ऑफ सॉइल आहियां, मुंहिंजो तमामु घणो इंट्रस्ट आहे त मां मोहनजोदाड़ो जे मथां, छो जो उहा दुनिया जी सभिनि खां पहिरीं सिविलाइज़ेशन आहे। छो जो सिंध खे, पाकिस्तान खे माण्हू दुनिया में एतिरो सुञाणनि कोन था, एतिरो ॼाणनि कोन था, छो जो अॼु ताईं असां उन्हनि खे असांजी पंहिंजी कहाणी ॿुधाए कोन सघिया आहियूं त असां केरु आहियूं। असांजी 5000 साल पुराणी जेका असांजी तारीख़ आहे मोहनजोदाड़ो जी, ऐं उन जेका सिविलाइज़ेशन आहे, जेका दुनिया जी पहिरीं सिविलाइज़ेशन काउंट थिए थी, उन जे बारे में अॼु ताईं का बि फीचर लेंथ फिल्म कान ठही आहे। त मुंहिंजो इंट्रस्ट आहे त मां उन ते फीचर लेंथ फिल्म ठाहियां। पर हिते मूंखे पंहिंजे मुल्क में के प्रोड्यूसर्स कोन आहिनि, फाइनेंसर्स कोन आहिनि जेके मूंखे हेल्प कनि। जीअं ॾिसो अली बाबा साहब हीउ नॉवल लिखियो मोहनजोदाड़ो, हीउ मोहनजोदाड़ो तमामु बहितरीनु नॉवल आहे जेको हुन पंहिंजे एक्सपीरियंस ते लिखियो त भई मोहनजोदाड़ो में इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट कई, छो तव्हांजा माण्हू फर्टिलिटी कल्ट ते बिलीव रखंदा, ज़मीन खे पूॼण ते, ऐं ख़ुदा खे जा बुत ठाहे करे पंहिंजे ग्राउंड में रखंदा, ऐं उनखे अची जेका नचणियूं हूंदियूं, जेके डांसिंग गर्ल्स हूंदियूं, डांस करे ख़ुदा खे राज़ी कंदियूं, मतिलबु दे प्रे फॉर गॉड इन डांसिंग वे। डांसिंग वॉज द एलिमेंट ऑफ प्रेइंग फॉर दैम। जो डांसिंग गर्ल के हवाले से मुझे इस तरह से, हालांकि मैं एक देहाती खातून हूँ, मतलब मेरा बचपन देहात में गुजरा, मगर उसके बावजूद मुझे शदीद इस चीज़ की ख्वाहिश थी कि मतलब मुझे तो नहीं था कि मुझे वो सारे मौके नहीं मिले कि मैं ख़ुद डांस सीख सकूँ, मगर मेरी बेटी क्लासिकल डांसर है और वो भरतनाट्यम और वो ओडिसी भी उन्होंने किया है। जो हमें मोहनजोदाड़ो की डांसर मिली है वो ज़्यादातर ओडिसी के करीब है। उनकी कभी इनकी अगर इंजरी हो जाती है डांस करते हुए, कोई छोटी मोटी,
और मुझे इसके डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ता है और पूछता है कि क्या हुआ, तो उनको बताना पड़ता है कि डांस करते हुए, तो उनको ऐसा फील होता है कि हम लोग प्रॉस्टिट्यूट हैं। तो जिस देश से डांसर गर्ल की जो है वो 5,000 10 जितने हज़ार, कुछ लोग उसको 10,000 मानते हैं, कुछ 12 और 5-6 हज़ार, मतलब इतने हज़ारों साल पहले जहाँ से डांसिंग गर्ल मिली है, वहाँ की डॉक्टर मुझसे कहती है या कहते हैं कि आप कौन से किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं कि आपकी बेटी डांस करती है। So, you know how teachers keep asking you, you know, what's your plan in your future university? I tell them I'm going to dance. That's what I want to do. I'm going to graduate in that. I'm going to do my PhD in that. But उनको ये बात बहुत अजीब लगती है। वो कहते हैं हाँ वो तो ठीक है, पढ़ाई क्या करोगी? You know, I mean, there's nothing wrong with taking up performing arts. And actually अब literature वगैरह को accept किया जाता है फिर भी, which I'm happy about. But music and dancing is still a little off. And इसके अलावा क्लासिकल डांसिंग में जैसे हम घुंघरू पहनते हैं, ये सारी चीज़ें, घुंघरू इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू prostitution for some reason. And I mean, classical dance is always very exaggerated. So the bright costumes and exaggerated makeup, it's always related to that. And that's how people look at us here, a lot of them. And another thing, like all these Bollywood, Sheila Ki Jawani, Nani Badnaam Hui, that is accepted, you know. That is dance and music for people. But these serious things aren't. कि मुझे हमेशा ये कहा जाता है कि अपनी बेटी को कथक डांस क्यों नहीं सिखाती है। मतलब वो समझते हैं कि कथक मुसलमानों का है, तो वो कहती है भरतनाट्यम क्यों, वो तो हिंदुओं का है, हिंदुओं का, और ओडिसी या भरतनाट्यम। तो ये भी एक बहुत, और ये चीज़ जो है वो मुझे इंटेलेक्चुअल कहते हैं, जो और ज़्यादा तकलीफ़ की बात है। इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि कथक सीखना चाहिए इसको। लेकिन उसके और भी रीजंस हैं। गॉट रीजंस लाइक पाकिस्तान में नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक ज़्यादा सुना जाता है, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल, एंड दैट इज़ व्हाट गोज़ विद कथक। कथक उसके लिए बना हुआ है। तो मैं असल में क्योंकि ड्रामे की फील्ड में या लिटरेचर की हूँ, इसलिए तस्वुराती तौर पर वो सारी चीज़ें देखती हूँ। तो जब मैं पहली दफ़ा मोहनजोदड़ो गई थी तो मुझे मेरी बड़ी बेटी जो थी वो उस वक्त मेरी गोद में थी, तो इस तरह से गली में हम लोग सब आगे पीछे हो गए और घूम रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा मैं उस डांसर गर्ल के घुंघरू की आवाज़ सुन सकती हूँ और वो उसको देख रही हूँ, वो बस अभी आएगी सामने, और मेरे एकदम से उसको इतना ज़्यादा तस्वुराती तौर पर मैंने लिया कि मुझे लग रहा था कि वो यहाँ कहीं मौजूद है और वो डांस कर रही है। और शायद इस वजह से मैं इन तमाम चीज़ों पर यकीन नहीं करती, मगर मुझे लग रहा था कि मैं उसको जन्म दे रही हूँ। The 4-inch statue of the dancing girl remains one of the most endearing findings from Mohenjodaro. Sometimes referred to as Sambura, she is the most sellable product, being used in advertising brochures and in contemporary plays. और किंग प्रिंस के भी बनाए हैं, डांसिंग गर्ल का बनाया है, डांसिंग गर्ल का वो है। इसकी एक कहानी जो हमने सुनी थी कि जब पार्टीशन हुआ था तो जो ओरिजिनल है इसका, वो डांसिंग गर्ल वो इंडिया चला गया और हमें जो है वो दाढ़ी वाला प्रीस्ट बना। अच्छा, वो म्यूजिक की हमसे ज़्यादा वो पहचान रखते हैं, ये सही फैसला हुआ है। हाँ, ये फैसला सही और हुआ है। हम नहीं मगर कहना वो पहचान रखते हैं, मगर ज़रूरत तो हमें है ना कि जब कोई रकासा इधर आ जाए माहौल भी उनको दे दो कुछ दिनों के लिए। ऐसी कोई बड़ी गनीमत हमारे के लिए है। हाँ। अगर मोदी उधर चले जाएं तो खुदा का हमारे ऊपर बड़ा जो है एहसान। The interesting thing about the dancing girl is that she plays a role in, politics in Pakistan today, 4,000 years later, a different society. But I do think there probably is some deep connection to dancing girls. And if it inspires dancers today in Pakistan or India, all the better, because that's the way that historical traditions reach across the arc of time and continue in different ways. Sir Mortimer Wheeler, the British archaeologist, describes the bronze statue as having a little Baluchi-style face with pouting lips and an insolent look in the eye. She's about 15 years old, I should think, not more. But she stands there with bangles all the way up her arm and nothing else on. A girl perfectly for the moment, perfectly confident of herself and the world. There's nothing like her, I think, in the world. The dancing girl is
I mean, the way she's so bold about her body and she's so confident about it, it shows, from that statue. That really inspired me. And I think after that, really, I started feeling so confident about my body. Her shoulders are so straight, and I think she's not even wearing fully, she's not fully dressed. It shows, and I love that. The reasons for the demise of Mohenjodaro remain shrouded in mystery, but a possible hypothesis includes climate change. Many aspects of the enigmatic civilization remain undiscovered. The Indus script, one of the oldest writing systems known to the human civilization, is still undeciphered, while structures such as the distinctive stupa, massive granary, and the Great Bath crumbled to ruin through salinity and the lack of upkeep. Even the name Mohenjodaro, which translates as the Mound of Death in the Sindhi language, is a modern interpretation, and the only link to its past is what is mentioned in the historical Arcadian scrolls. A city-state to the east of Samaria, a place called Meluhha. A number of serious archaeologists have gone for Meluhha as being the Mesopotamian name for the ancient Indus Valley civilization. It makes sense given what we know now, but things might change. We might get more data coming up. I think it's important to have a name for a place. It's very hard to imagine a place without giving it some kind of a name. And if Meluhha evokes what we know about the ancient Indus Valley civilization today in 2014, that's good. And maybe we'll get a more accurate name. Maybe we'll know what the people actually call themselves at some point in the future. Today, Meluhha lies forgotten to the world, but not to its inheritors. For them, it goes beyond nationalistic pride and religious identity, as they continue the ancient ways of the Indus civilization, as artisans, dancers, poets, and revolutionaries. Sunday, what's